Okay. So good morning, everyone. So these are the warm-up questions, right? So that everyone can join till that point. Okay. So let's start. Okay, Pranjal, no issues. Just message in the chat box. Okay, just message in the chat box. First question is, when an observer moves toward a stationary source with a certain velocity, okay, he observed at apparent frequency f. When it moves away from the source with the same velocity, the observed frequency is 0.8 f. If the velocity of sound is v, then the speed of observer is, right? Basic application of Doppler's effect. है ना? Basic application of Doppler effect. Try to find the answer, everyone. Guys, 15 seconds left. 10 seconds now. That's why OS easy वाला था ना, easy version था, right? Today I'll unlock the actual version. ठीक है? Easier version was just for warm up, right? Only 3 students got it correctly. देखो यहाँ पे. First of all, you have to ask, right? That observer is moving or source is moving. So that's the first thing, right? So observer is moving and source is stationary. So we know that f is equal to f naught bracket v. Now if observer is moving toward the source, practically think, right? The frequency will increase ना, जैसे जैसे source के पास observer आएगा, right? तुमको आवाज ज्यादा loud सुनाई पड़ेगी. So it will be v plus v naught by v, है ना? Right? और अगर दूर जाएगा, है ना? If you go far away, then again तुमको कम सुनाई पड़ेगा, right? So it is f naught v minus v naught by v. Clear है? Right? I hope this is clear. And this ratio is given by 0.8, है ना? So, right, divide this. Either you divide f1 by f2 or f2 by f1. So I'll divide f2 by f1. Okay, so if I divide f2 by f1, I'll get this v minus v naught by v plus v naught is equal to 8 by 10. 8 by 10, which is 4 by 5. So if you solve this, you will get the value. Hi Anna, tell me. Yes or no? You will get v by 9. Hai na? If you solve this, you will get v by 9. Agree? 5v minus 5v naught is equal to 4v minus plus 4v naught. Right? 4 you side le jao, 5v naught side le jao. So v is equal to 9v naught. So v naught is equal to v by 9. Agree everyone? Right? So this was very basic formula putting getting. है ना? So अगर गलती हुआ तो देखो क्या गलती हुआ है. ठीक है? Okay. Next question everyone. Guys, you have to try. ठीक है? Try करोगे तभी सही होगा. Doppler shift in frequencies does not depend on your theory. This is just a theory. Yes, that's what happens. Wes, same ही होता है. Even I also used to think like that only, right? वो confusion ही नहीं होता है कि क्या
प्लस होगा क्या माइनस होगा? ओके अभिराम, इजी है, तो बहुत इजी है, इसमें सबका सही होना चाहिए, राइट? दिस इज टोटली बेस्ड ऑन फॉर्मूला, है ना? यस। ओके श्रीहरि, अभिराम, एवरीवन प्लीज आंसर दिस। इसमें भी गलत हो गया लोगों का? कैसे कैसे कैसे, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो फिर क्लास में। f इज इक्वल टू एफ नॉट ब्रैकेट v प्लस माइनस वी नॉट बाई v प्लस माइनस वी एस, यही फॉर्मूला है ना भाई, राइट? सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड। तीनों पे डिपेंड कर गया, हाँ या ना? तीनों पे डिपेंड कर गया। या गॉट इट एवरीवन? एवरीवन समझ में आ गया? सबको समझ में आएगी नहीं कॉन्सेप्ट? ओके अभिराम, think about it guys, think about it. सेम क्वेश्चन किया हमने लास्ट क्लास में, सेम क्वेश्चन, यस और नो? वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, राइट? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स गॉट इट रॉन्ग, ठीक है? कैसे देखते हैं, राइट? आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर। ओके, यहाँ पे देखो क्या है, फ्रीक्वेंसी इज गिवन, एफ नॉट इज गिवन, एफ नॉट, राइट डाउन द इंफॉर्मेशन ना, राइट डाउन द इंफॉर्मेशन, एफ नॉट इज 480, राइट? नाउ यहाँ पे अगर देखोगे तो फर्स्ट केस, केस वन केस टू कर लो, राइट? नहीं तो डायरेक्टली कर लो, है ना? So if you take case one, then it is your source and observer is at rest. So f1 is equal to f naught bracket v by v now minus vs, है ना? Because it is going toward the source, sorry, toward the observer, right? So ज़्यादा loud सुनाई पड़ेगा तो derivation should be less, as simple as that. Now when you talk about echo, for echo the frequency should be what? f2 is equal to f1 bracket. Now in this case, right, the wall is acting as a source and the car is acting as an observer, right? An observer is moving. यहाँ पे v plus v naught by v, और यहाँ पे v naught is equal to vs है ना? Okay, right? So let's see क्या आंसर है. So put it. So if you put it,
F2 is equal to F naught ब्रैकेट V प्लस V नॉट बाई V माइनस VS, है ना? ठीक है, कैलकुलेटर चेक करो एक बार। 540 है क्या? 540 सही है, जो then most of you are correct. Check guys everyone, 480 into bracket, ठीक है, right, what 330 plus 20 by 330 minus 20, है ना? ठीक है, so it is 480 into 350 by 310. Okay everyone, so calculate कितना आ रहा है? 540 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आंसर रॉन्ग दिया है, ठीक है, यहाँ पे आंसर रॉन्ग दिया है। ओके राइट, 540 का आंसर रॉन्ग दिया है बिकॉज़ इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, गॉट इट। अभिराम तुम्हारा फिर कैसे हुआ? पहले तुमने 540 बोला था, फिर 510 बोल दिया, व्हाई? आई होप एवरीवन गॉट दिस, रेज योर हैंड गाइस। सबको समझ में आएगी नहीं यहाँ पे? कोशी, खुशी, कृष्णा, मौलिक, रिया, रिया सिंह, साम्या, श्रेया, सुहास, अनामिका, सानिया, स्नेहा। ओके, ठीक है, द कॉन्सेप्ट नहीं गलत करना है। वेरी गुड, चुलिका इन सेकंड पोजीशन, कृष्णा इन फोर्थ पोजीशन, वेरी गुड एवरीवन। हाँ, गलत करके ऊपर आए तो अलग बात है। गलत करके ऊपर होंगे, that's true. Only two students got correct answer. Is it wrong? Tell me, is it wrong? आंसर गलत है क्या? ऐसे कैसे हो गया? Owas said he got 400. Abhiram said he got 450. Right? Let's see. ठीक है, सबको देखो. The frequency of whistle is 300 hertz. So F naught step by step, हमेशा step by step. Concept बहुत strong रखना है. हिलना नहीं चाहिए concept. F naught हो गया. Now it is approaching toward an observer with a speed 1/3 speed of sound. Okay. So V source is given, which is V by 3. ठीक है, V is the speed of sound. Easy है ना फिर तो, right? ठीक है, F is equal to F naught bracket V, now plus V by 3. No, because it is source, तो ये गलती नहीं करना है. Divided by V minus V by 3, है ना? Right? So normally ये गलती नहीं करना, तुम्हें देखना है ना कि कौन मूव कर रहा है. That is general mistake that you guys might do. That's the only mistake that you can do, है ना?
हमेशा रखना ऑब्जर्वर ऊपर सोर्स नीचे, हमेशा याद रखना ऑब्जर्वर ऊपर सोर्स नीचे, ठीक है। आज ऑब्जर्वर ऊपर सोर्स है नीचे, ठीक है। तो गाना है ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, राइट। ऑब्जर्वर ऊपर सोर्स नीचे, है ना। तो पुट का आ जाएगा 300 v by v minus v by 3 is 2v by 3, तो v कट गया, 3 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। द आंसर इज 450। सबको समझ में आ गया? रेज योर हैंड, एवरीवन गॉट दिस, राइट, है ना। तो वो गलती नहीं करना है। प्रियंका गॉट इट, यू जॉइन नाउ आई गेस। ठीक है, चलो सामने गॉट इट, करेक्ट। Try solving this, everyone. ओके, वेरी गुड। एटलीस्ट 2 लोग गलत में इस बार, बाकी सब सही हैं। यस, है ना। तो आई गेस सबको आइडिया लगा कॉन्सेप्ट का। A table is revolving on its axis of 5 revolution per second, right? है ना। So 5 revolution per second is given, ठीक है। A sound source of frequency 100 hertz is fixed on the table at 70 centimeter from the axis, right? The minimum frequency heard by the listener, sorry, standing at a distance very far from the table will be. Now, I hope ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? Right? Yes? है ना? So I can say, okay, if the table is revolving, right? If the table is revolving, okay, and F naught is given. I'll just write down. F naught is given, which is 1000 hertz, है ना? Step by step. Okay? And speed of sound is 352. Now, what is V? V is equal to omega R, हाँ या ना? Yes or no? Yes or no? Tell me, guys. Agree? Yes. So V निकल जाएगा. Tell me. 5 revolution per second means omega पता है, right? R पता है, V निकल जाएगा. And we know that if you talk about this point, okay, the minimum will be at this point जहाँ पे इधर जा रहा है, because the source is moving away from the observer, right? Clear है? Tell me, clear है? And yes or no? So F is equal to F naught bracket B by B plus Vs.
ठीक है, सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था? सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, सर हमें पहले v निकालना है, ओमेगा गिवन था, राइट, और रेडियस गिवन था, ठीक है, राइट। राइट डाउन दिस स्टेप्स, राइट। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, देखो कि क्या गलती किया तुम लोगों ने। वेरी गुड। वैस क्या कर दिया तुमने? राइट, वेरी गुड। सामने एक्चुअली का फर्स्ट सेकंड पोजीशन, लूज कंपटीशन सामने चिलिका के बीच में। चिलिका के गलत क्वेश्चन हुआ था, वो अलग बात है। नाउ दिस वन, एवरीवन थिंक अबाउट इट। ओके, अभी डाउन तो कॉन्सेप्ट हम स्ट्रॉन्ग कर लेना है इस आउट के बाद, ठीक है, कि हम लोग को समझ में आए। ओके, राइट, constants are correct, we are wrong, वो भी 140। now एक चीज बताओ, simple चीज, right, if frequency will increase what will happen to wavelength, tell me। आई होप हम लोग जब ड्राइव करे थे फॉर्मूला, सबको पता होगा ना, एक केस में वेवलेंथ चेंज करा था, राइट, और एक केस में फ्रीक्वेंसी, यस और नो। आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस, ठीक है। So the wavelength is 120 centimeter when source is stationary. The source is moving with relative velocity of 60 meter per second. Relative velocity दे दिया है ना? So it is already given as 60 what the observer, okay? Then the wavelength of sound wave reaching the observer will be. Now guys, I hope all of you understood the concept. F is equal to F naught, same concept, right? है ना? Is equal to what? Tell me. Source is moving, right? So V by V minus Vs. Okay? So तुमको frequency निकल गया, so we know that wavelength lambda is equal to what? Tell me. Frequency के terms में क्या होता है? पता है ना? Yes or no? I can just convert this in terms of frequency. 1 by lambda is equal to 1 by lambda naught. Right? That's it. यहीं पर reverse कर दो ना, V कट जाएगा. ठीक है? हाँ है ना? Because F is equal to V by lambda. So 1 by lambda is equal to 1 by lambda naught into this. ठीक है? Yes, got it everyone? Raise your hand. है ना? Yes or no? F की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे? V by lambda. Okay? ठीक है? Next. Very good, Chulika. First position. Very good. I'm happy that at least
Many of you are at least trying. ठीक है, try करो एक बार. क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया है, सबको याद होगा ये कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ बीट्स. ओके, 3 स्टूडेंट्स गॉट करेक्ट, बाकी 6 लोग गलत हैं. अभिराम अवैस, क्या लग रहा है, आंसर गलत है? ऐसे कैसे हो गया? F1 निकलेगा. What is F1? Guys, tell me F1 is equal to what? V by lambda 1, yes or no? हाँ या ना? Right? And F2 is equal to V by lambda 2, yes or no? And we know that beat frequency is equal to mod of F1 minus F2. बस यही तो करना था. That's all you have to do. Yes, agree? Right? So it is 396 by 90, 396 by 100, है ना? ठीक है? Got it? Yes or no? निकल जाएगा. ओके, सेंटीमीटर है ना, तो इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, सेंटीमीटर है तो इंटू 100. ओके, दैट्स इट. यस यस, इंटू 100. ठीक है ना? So most of the students, I guess most of the students did not convert this into centimeter, है ना? इसीलिए like 4 point something आया तो 4 मार दिया. Yes और यही हुआ सबके साथ. This is what you did, right? यही mistake हुआ सबके साथ. तो देखो ऐसे ऐसे मिस्टेक्स भी होते हैं एग्जाम में, अदरवाइज ये प्रॉब्लम इज नॉट डिफिकल्ट, राइट? दिस प्रॉब्लम इज नॉट डिफिकल्ट, है ना? यस, ठीक है. ओके, नेक्स्ट. मानसी इज द हाईएस्ट क्लाइंबर. वेरी गुड मानसी.
Okay, 6 students got correct answer. Okay. Unknown tuning fork sounded together with a tuning fork of frequency 256 emit 2 beats. Okay. Unloading tuning fork of frequency 256, the number of beat heard is 1 per second. The frequency of unknown fork is, मैं बताता हूँ, ठीक है मैं बताता हूँ, तो यहाँ पे इजी है ना. टेल मी, हम लोगों ने एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था? यस और नो? राइट, आई होप सबको याद होगा. 200 516 508 वाला है ना? राइट, हाउ मेनी ऑफ रिमेंबर 516 508 वाला, जहाँ पे पहले 4 था, बाद में 2 हो गया. राइट, सो एग्जैक्टली वही है ना. So earlier it was what? Earlier it was 2. So 256, right, minus x is equal to 2. Now after loading means बढ़ गया frequency. I did, guys, I got disconnected, right? So frequency will decrease, right? So now it is becoming 255 minus x is equal to 1. Okay, so it is 1. So x is 254. So ये थोड़ा सा थ्योरी था, याद रखना पड़ेगा. Okay. Okay, right, so 3 students right, 3 students wrong, sorry, 4 students wrong. Maximum of beat frequency heard by human being is 10. याद रख लो 10. Okay, right. Last question, everyone. 25 tuning forks are arranged in series in order of decreasing frequency. बस सारेगामा पता है क्या होता है? सारेगामा, राइट, म्यूजिक में. So every first and eighth frequency is same. हाँ या ना? Tell me, every first and eighth is same. That is called as octave. ठीक है, right? The distance between first and eighth, second and this, so that is your octave. Like normally यही होता है. बाकी क्वेश्चन के सब
वहां पे क्या मीन कर रहा है, बट नॉर्मली तो यही होता है. Okay, 6. Students got it correct. Students got it wrong. 25 tuning fork are arranged in series in order of decreasing frequencies. Any two successive fork produces 3 beats, right? If the frequency of first tuning fork is the octave of last tuning fork, right? Then the frequency of 21st tuning fork is. यही क्वेश्चन आया था क्या? Exactly. Okay. यहाँ पे देखो 25 tuning forks हैं हमारे पास, है ना? And then series, right? And we know that two successive fork produce 3 beats per second, right? So first, second, third, and all have 3 beats per second, right? So the difference in frequency is given 3. The frequency of first tuning fork, right, is the frequency of first tuning fork is the octave of the last fork. Okay. And the frequency of 21st is, right? Okay. So everyone, right? Let's see. Sorry, even I got to know this now only. Okay, I still there's some issues with my writing pad. It's not working. Okay. So as it said, right? दोनों concept use करेंगे. So हम लोगों ने अभी क्या देखा कि octave is basically the interval, right? Octave is the interval जहाँ पे frequency 2:1 होती है. ठीक है? Okay. So it is said that first tuning fork is an octave with last tuning fork, right? Means frequency of first tuning fork and last tuning fork is associated with the ratio 2:1. That's it. Okay, right? That is the concept over here. So first को मान लेते हैं f. First को मानते हैं f. I don't know why my writing pad is not working. Just give me a minute. Okay, I'll just try writing like this. So first मानते हैं f. So according to this, right, this octave का मतलब सिर्फ एक ही है. Octave का मतलब रेशियो जो है वो 2:1 है. ठीक है? ठीक है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट और भी रखना ये चीज कि अगर which means third दे देता, fourth दे देता, right? So that is also an interval, है ना? So octave, third, fourth, fifth, they all are the ratios, right? They all the intervals in which frequency will be in some ratio, है ना? So octave के लिए the ratio is 2:1, third के लिए the ratio is 5:4, fourth के लिए 4:3, fifth के लिए 3:2, right? ये लिख लो. अगर मान लो सीटी में आया तो जेई में तो नहीं आएगा, नीट में भी नहीं आना चाहिए because it's not in syllabus, right? But you should write it down. Okay. So यहाँ पे first and last. First and last is given. So first को f मान रहे तो last क्या हो जाएगा? 2f. Yes or no? Last is 2f, right? है ना? Okay, and we know that the beat is 3. So first is f. Second will be f plus 3. F plus 3.
right? Third will be f plus 6 and so on. So if you see this, then you will get what? 25th will be what? F plus 24 into 3, हाँ या ना? F plus 24 into 3 is equal to 2f. So can you find the value of f? निकल जाएगा. ये AP का ही क्वेश्चन एक्चुअली. This is a question of AP. That's it. Right? ये AP का ही क्वेश्चन हो गया है. ठीक है. फिर तुमको 21st का निकालना है. So it's like कि nth टर्म दिया हुआ है, तुमको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, right? Find this. Yeah, find first term, right? And common difference is given. So find 21st term. Okay? सबको समझ में आया? Just wait, guys. My this that got discharged, I guess. That's why. So सबको समझ में आ रहा है? So Fn, which is 2f, is equal to what? 2f is equal to f plus 24 into 3, है ना? 24 into 3. ठीक है? Got it? f इधर ले जाओ, आ गया. F is equal to what? 24 into 3 is आ गया. सबको समझ में आया ये? Tell me, everyone got this? Yes or no? है ना? यहाँ पे कितना आ गया? 72. Got it? Tell me. हाँ या ना? ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट. तुम लोग कैसे आ गए? तुक्का मारे क्या? कितने लोगों ने तुक्का मारा? कितने लोगों ने सॉल्व किया है? टेल मी ऑनेस्टली, टेल मी. 84 कैसे आया तुम लोगों का? तुक्का. इतने लोग तुक्का. Even frankly, because I also didn't know this, right? मैंने अपने टाइम में नहीं पढ़ा था ऑक्टेव, थर्ड, फोर्थ, right? ठीक है. I honestly agree कि because it was never in CET, sorry, J syllabus और CET हमारी तरफ होता नहीं है. ठीक है. So octave, third, fourth मैंने कभी नहीं पढ़ा. ठीक है. किसी बुक में भी जनरली नहीं है. जेई के किसी भी मटेरियल में तुमको नहीं मिलेगा ये. Like I didn't find. हो सकता है हो, but I didn't find. ठीक है. I checked 4 sources. तो ठीक है. But I hope all of you know now know, है ना? So octave की जगह कुछ भी दे सकता है. थर्ड दे सकता है, फोर्थ दे सकता है, फिफ्थ दे सकता है. You just should know the ratio. That's it. ठीक है. Got it, everyone? Everyone got this? This is तुक्का. This is I assume कि सबका ये तुक्का होगा. ठीक है. Pradyumna is third place. Chulika second. Very good. First, who is first? Owas is first. How come Owas? तुक्का. Samya fifth था, fourth Pradyuman था शायद आगे. Pranjal. Okay. So this is it, right? Okay. So let's start with IC. ठीक है. Just give me some time, guys. My internet this keep. Okay. Sorry, everyone. Right now it's working. It's working fine. ठीक है. So question number 1 सबको समझ में आया कि नहीं? हाथ उठा लो. किसी को दिक्कत है question number 1 में? Yes or no? No? Because we know that stress is equal to what? Force per unit area. है ना? And this
V1 is equal to what? V1 is equal to root y by rho, and V2 is equal to root f by mu. ठीक है? And it is given that this V1 is 10 times V2. ठीक है? So root y by rho is 10 times root f by mu. And we know that density is equal to what? Mass into area, and this is mass in by length. Density is mass into volume. This is mass into length. ठीक है? So यहाँ से मुझे क्या आ जाएगा? Or you can just write it is density into area. Density into area, and force by area is your stress. यही तो निकालना है. Density will get cancelled, right? So it will be what? Tell me. Young modulus by 100. ठीक है? Got it? Now second हो जाएगा. Third, the velocity of sound in hydrogen is given when some amount of oxygen is mixed with hydrogen. The velocity decreases to this. Determine the ratio of H2 and O2 by volume in this mixture. Given the density of oxygen is 16 times density of hydrogen. ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाएगा. हाँ या ना? दिस क्वेश्चन इज केमिस्ट्री क्वेश्चन. यस और नो? इंस्टेड ऑफ फिजिक्स क्वेश्चन, दिस इज केमिस्ट्री क्वेश्चन. सबको याद होगा ये चीज? टेल मी. M of mixture क्या होता है? M of mixture is equal to what? और density of mixture क्या होगा? What is density of mixture? Tell me. Total mass by total volume. Total mass by total volume. Guys, respond. Please respond. Pradyumna, Chulika, Riya, Priyanka, Sneha, Anisha, Anaga, Jasharan, Khushi, Koshi. ये कॉन्सेप्ट पता है ना? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट? ओके, सोचना है ना? Now when you talk about the total mass, it is what? It is volume A, volume into mass. हाइड्रोजन का मास मैंने क्या माना यहाँ पे? 2 प्लस ऑक्सीजन B into 32 by volume, which is A plus B. Agree? Tell me, agree? हाँ या ना? इक्वल वॉल्यूम नहीं है ना? इक्वल, राइट? ठीक है, ये तो निकालना है. Agree? That is what we have to find. So this is rho mixture. This is rho mixture, and we know the formula. We know the formula. Velocity is equal to root P by rho. P by rho. Okay, I'm just taking Newton's formula. Gamma P by rho you can take, but anyways it will be cancelled, है ना? So V1 by rho V2 is equal to rho 1 by rho 2. So there you can find it. Clear? सबको समझ में आया? हाँ या ना? हो जाएगा? I hope everyone can solve this. Now fourth one. The figure shows the instantaneous displacement position. I hope ये सबको पता होना चाहिए, right? कि जहाँ पे displacement में नोड बनता है, वहाँ पे प्रेशर के लिए एंटी नोड होता है. How many of you remember this? Tell me, how many of you remember this? सबको याद है ना? ठीक है? So ये बन जाएगा सबसे, right? This is theory that we have discussed a lot, right? Don't worry guys, after today's class I'll upload all the solutions, right? जो भी जितने भी solutions हैं ना मैं upload कर दूंगा. Please solve it once and try to see the solutions at least. Fifth one, a point source emit sound wave in average power output is given, right? Average power output is given. Find the intensity 3 meter away from the source. Easy है. Intensity formula क्या होता है? बताओ. Power by area. हाँ या ना? हाँ या ना? Intensity is power by area. Everyone got this? है ना? And we know that point source, the wavefront of point source is your sphere. So area is the area of sphere, which is power by 4 pi r square. Students are leaving. Why? Okay. एक और कम हो गया. ठीक है. Now
Find the distance at which the intensity of sound is this. Again उल्टा है, इंटेंसिटी दिया है, पावर दिया है, एरिया पूछ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा. 6th one, the faintest sound the human ear can hear at a frequency of 100 hertz correspond to intensity of this, okay, which is called threshold of hearing. The loudest sound the ear can tolerate at this frequency correspond to intensity of this, the threshold of pain, okay. Determine the pressure amplitude and displacement amplitude associated with these two limits, okay. Now, सबको फॉर्मूला पता है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाफ, टेल मी, आई होप सबको पता होना चाहिए. हाफ I is equal to इंटेंसिटी फार्मूला प्रेशर के टर्म में डिराइव किया था हमने ना, डिराइव किया था गाइस, डेल्टा P स्क्वायर बाई रो वी. यस और नो, हाउ मेनी इफ रिमेंबर दिस, कितने कितने लोगों को याद है, इंटेंसिटी फार्मूला डिराइव किया था हाफ डेल्टा P स्क्वायर बाई रो वी. देखो फार्मूला नहीं याद है तो नहीं बनेगा, है ना, हम लोगों ने पूरा डिस्प्लेसमेंट वेव से डिराइव किया था. एग्री, टेल मी एग्री, right? So this is the formula. Delta P is the pressure amplitude. So निकल जाएगा ना, delta P is equal to what? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जाएगा रूट 2 रो वी आई. Formula putting getting, agree? Formula putting getting, and we know that delta P is equal to what? Delta P max is equal to what? Buck, buck, हाँ या ना. So अगर delta P max पता है तो A पता है ना. आप बोलोगे सर B तो नहीं पता ना, तो B नहीं पता है, एग्री, बट B का तो बेसिक पता है. व्हाट इज B? रो V, है ना, राइट. और BK is equal to what? BK is equal to rho V omega. हम लोगों ने इसे भी ड्राइव किया है. So this is the formula, है ना. सबको समझ में आ रहा है स्टेप बाय स्टेप, सबको समझ में आ रहा है. टेल मी गाइस, we have studied these things, formula putting getting है, but तुमको दिक्कत ये होगी सर ये फॉर्मूला ही नहीं याद है सर, नहीं रिवाइज किया सर, राइट. दैट इज व्हाट विल बी द इशू, है ना. अदरवाइज ये फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग, राइट, प्रेशर वेव निकलेगा, प्रेशर मैक्स का एम्पलीट्यूड निकलेगा, फिर डेल्टा पी इज इक्वल टू बॉक. फिर पूछो सर बी तो नहीं पता है, बट बी नहीं पता है तो मुझे बी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी पता होनी चाहिए, ठीक है. ओके, 6th done. 7th, a family ice show is held at enclosed arena. The skater performs music to level 80 decibel, okay. This level is too loud for baby who yells at 75 decibel. What total sound intensity engulf you? बताओ. I hope all of you can find I1 and I2. Yes or no? I1 I2 निकलेगा? Guys बताओ I1 I2 निकलेगा? हाँ या ना? 80 डेसिबल से I1 निकल जाएगा, फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग. यहाँ से I2 निकल जाएगा, फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग. So I max जो तुमको मिलेगा वो क्या होगा? I1 plus I2. As simple as that. Yes or no? हाँ या ना? ठीक है. और टोटल इंटेंसिटी क्या होगा ना? टोटल इंटेंसिटी इज, दिस इज I max, so total intensity beta total is equal to I max by 10 into log I max by I naught, ठीक है, राइट. सो दिस इज आल्सो फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग. सबको समझ में आ गया? प्रांजल, प्रीतम, यू जस्ट ज्वाइंड. रौनक, सैस्मुति, साम्या, श्रेया, अनामिका. इतना एब्सेंट कौन हो रहा है? Okay. 7th one clear, everyone? Raise your hand. If 7th one is clear, please raise your hand. Okay, very good.
8, क्वेश्चन नंबर 8, सोचो एक बार क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखते हैं। A tuning fork vibrates at this hertz. Find the length of the shortest closed organ pipe that will resonate with tuning fork. Speed of sound in air is this. Now, I hope all of you understood what is the basic problem here. Hi Anna, tell me, what is the frequency of closed organ pipe? What is the general formula of frequency of closed organ pipe? Tell me guys, closed organ pipe का frequency क्या होना चाहिए? I hope सबको पता होगा. N B by 4L. हाँ या ना? Yes or no? ठीक है? Now, according to this, L should be minimum. If L should be minimum, what should be the value of N? Tell me. N should be L should be minimum. So what should be the value of N? 1 होना चाहिए ना. Minimum तो ये होगा ना, और कितना ही होगा? Minimum तो यही होगा, lambda by 4. 1. Very good. और F का value given है. F का value is 264 hertz given. It's actually given. है ना? So 264 is equal to V by 4L. Can you find L? Because V is also given. हाँ या ना? Step by step. Easy है कि नहीं? Formula putting है कि नहीं? पूछो अपने आप से कि सर समझ में आया कि नहीं आया, इसमें क्या दिक्कत हो गया है, मतलब कैसा कॉन्सेप्ट था जो नहीं समझ में आया, राइट? सो आई होप ऑल ऑफ यू फाइंड दिस. L is equal to V by 4 into 265. ठीक है? Okay, next. Ninth one. The fundamental frequency of a closed organ pipe is equal to first overtone frequency in an open organ pipe. ये क्लास में हम लोगों ने किया हुआ है, हाँ या ना? How many of you remember this? How many of you remember this? Similar type of problems? V by 4L 1 is equal to first overtone, which is 2 V by 2L2. Yes or no? हाँ या ना? ठीक है, because first overtone means second harmonic, open organ pipe में. ठीक है, right? So V will get cancelled, this will get cancelled. So L1 by L2 is equal to 1 by 4. Easy है, बन जाएगा. Okay. Yes. So लेवल 3 हम लोग बाद में करेंगे. ठीक है, होमवर्क प्लीज एक बार देख लेना. आई जस्ट सेंड द सॉल्यूशन, राइट? ओके, तुम लोग को जितना टाइम लेना है होमवर्क के लिए ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज सेकेंड वर्जन विल बी इन आफ्टर योर एग्जाम. ठीक है, आई होप डॉपलर इफेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. और डॉपलर इफेक्ट के हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी किए हैं. ठीक है, तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप. A police siren emits a sinusoidal frequency. F naught is given here, B given here. Find the wavelength if the siren is at rest. Formula putting getting. Wavelength का formula put कर दो, आ जाएगा, है ना? Right? Lambda is equal to, tell me, B by F. Second, the siren is moving, right? Source move कर रहा है. Formula putting getting. Right? हाँ है ना? First one हो जाएगा. Guys, you have to speak up, right? मैं बार बार बोल रहा हूँ, और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो पूछना होता है. प्रियंका, श्रेया, साई स्मृति, लोग समझ में आ रहा है? Because you have to ask, right? अगर यहाँ नहीं पूछ पाओ तो किससे पूछोगे? Second, standing at a crosswalk, you hear frequency of 560 hertz
from the siren of an approaching ambulance. Okay, after ambulance passes away, the observed frequency of siren is this. याद है सबको, हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन कर लिया है, हाँ या ना? हाँ या ना? F1 is equal to F naught bracket source is moving, so V by V minus S. And in second case, F2 is equal to F naught bracket V by V plus S, right? Ratio निकाल लो, you will get, ठीक है? Now third one, to permit measurement of a speed, a skydiver carries a buzzing emitter, okay, emitting a steady tone of this. So this is F naught. Information हमेशा लिखना होता है, ऐसे अप्रोच करना होता है क्वेश्चन को, ठीक है? सानिया समझ में आ रहा है, राइट? श्रेया, प्रियंका, साई स्मृति, समझ में आ रहा है कैसे अप्रोच करना होता है? हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब सर ये F naught है, that is right, that is information. Second, a friend on the ground at landing site directly below, listen the amplified sound he receives. Okay, amplified sound he receives. Okay, assume the air is calm and the sound speed is given, right? While the skydiver is falling at terminal speed, ठीक है, terminal speed, right? गिर रहा है. His friend on the ground receives a frequency. Now this is F1, as simple as that. Doesn't matter क्या है, सर मुझे पता है, सर मुझे पता है F1, ठीक है, right? मुझे पता है F naught, मुझे ये भी पता है कि ये गिर रहा है, means source is moving, so V by V minus Vs, because सर पास आ रहा है ना, तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, और यहाँ पे दिया हुआ है 1800 से 2150 हो गया, तो बढ़ रहा है. और सर ये टर्मिनल वेलोसिटी, अरे तो टर्मिनल वेलोसिटी क्यों दिया रहेगा? बिकॉज जैसे नीचे गिरेगा, the velocity is constant, that constant velocity is your terminal velocity, जो हमें पता होना चाहिए, हमें पता है ऑलरेडी, आई होप सबको पता है कि what is terminal velocity. अब बताओ सर, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गया ना, F1 गिवन है, F नॉट गिवन है, V गिवन है, Vs नहीं गिवन है, Vs निकालना है, निकल गया, राइट? देन सेकंड वन, सर सेकंड वन तो सेम क्वेश्चन है, रिफ्लेक्ट होके कुछ नहीं दे रहा है, तो देन F2 is equal to F naught bracket V plus V S by V minus Vs, सिंपल, राइट? हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है, क्लियर? थर्ड वन. Fourth one, a train approaching a railway crossing at a speed of 120 km per hour. Sir, Vs given है sir. This is Vs. सबको इंग्लिश समझ में आना चाहिए. आई होप सबको यहाँ पे इंग्लिश आती है. Yes or no? किसी को नहीं आती है? आई होप सबको इंग्लिश आती होगी, है ना? क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझ में आया, उसमें दो ही चीज नहीं समझ में आएगा. आइदर तुमको इंग्लिश नहीं समझ में आया, राइट, और कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया. सो यहाँ पे भी इंग्लिश की बात हो रही है. यहाँ पे जिसको भी इंग्लिश आता है समझ में आता है, सर दिस इज सोर्स वेलोसिटी, राइट? ट्रेन अप्रोच करे तो ऑब्जर्वर थोड़ी ना होगा, ये सोर्स होगा. दिस इज F naught, right? Frequency of whistle. It is 300 meter away from the crossing. The speed of sound is given. V is given. What would be the frequency heard by person on the road perpendicular to the track crossing at a distance 400 meter from the crossing? ठीक है, निकल जाएगा. Tell me, हाँ या ना? Yes or no? सर ये इंफॉर्मेशन तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है ना, हाँ या ना? हम लोगों ने देखा सर डिस्टेंस से तो ऐसे ही फर्क नहीं पड़ता है. ये जो 300 400 है, अब बच्चा ये सोचेगा ना कि भाई डिस्टेंस दिया है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बताओ, टेल मी. व्हाई दिस डिस्टेंस इज गिवन? कोई तरीका है, कुछ है? How many of you can tell me why this 300 400 meter is given? क्या मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दूं, F is equal to F naught bracket V by V minus Vs? Can I just use this formula?
ठीक है, तो सवाल यहाँ पे ये है कि ठीक है सर ये फॉर्मूला लगेगा, दैट्स करेक्ट, सही है, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत क्या है सर, आपको पता होगा जो ये वीएस और वी नॉट होता है दैट इज along the line, yes or no, right, yes or no, हाँ या ना, राइट। ओएस सोचो ये क्वेश्चन, सब कुछ सोचेगा, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रेन ऐसे आ रहा है, ये इतना दूर और इतना दूर, यहाँ पे भाई बंदा खड़ा है, द गाय इज स्टैंडिंग ओवर हियर, ऑब्जर्वर इज हियर एंड दिस इज द ट्रेन, राइट, ये क्वेश्चन है, सबको समझ में आ रहा है ये चीज, सबको समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन है ना वैस। So velocity should be taken in this line, right, ये 90 डिग्री है, ये लाइन के अलोंग होना चाहिए और ये लाइन के अलोंग दिया हुआ है, this distance is given, can you find velocity across this, because अगर इसको थीटा ले लोगे, right, so tan theta is given, you have to find this, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, हाँ या ना, हो जाएगा, 300 है 400 है, I hope all of you remember, right, I don't know which is 300 which is 400, I just take this is a 300, this is 400, this is 500, है ना, so cos theta is equal to what, एक बार देखेंगे कि कौन 300 कौन 400, but I'm just telling you the step, right, so cos theta is equal to what, 300 by 500, which is 3 by 5, है ना, so here the component is, I guess all of you can find it, ठीक है, क्लियर ये चीज, गॉट इट एवरीवन, हाँ या ना, हाँ या ना, सबको एक क्वेश्चन समझ में आ गया, रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू गॉट दिस, रेज योर हैंड इफ यू डोंट, आस्क, श्रेया, प्रियंका, श्रीका, क्वेश्चन में क्या लिखा है, सबको समझ में आ रहा है ना, 400 मीटर अवे, राइट, है ना, एंड 300 मीटर अवे एंड 400 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, वेरी गुड श्रीका, वेरी गुड एवरीवन, ठीक है, फोर्थ समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, फॉर्मूला वही लगेगा सर, बट द कॉन्सेप्ट इज इट शुड बी अलोंग द लाइन ऑफ अप्रोच, ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वन, a submarine travels through water at the speed of this, right, v1 लिखते हैं, emitting a sonar wave of frequency this f naught, the speed of sound in water is given, right, बहुत ज्यादा होता है, so this is v. This second submarine is located such that both submarines are traveling directly toward each other. The second submarine is moving at this, the velocity of observer is given. Easy है, tell me, easy है. What frequency is detected by observer riding on sub B as the submarine approaches each other? It's a formula, sir. F is equal to F naught. V, now they are approaching each other, so it is V plus V naught by V minus Vs. Yes or no? हाँ या ना, बन जाएगा पहला वाला, फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग, सर एफ नॉट गिवन है सर, राइट, ऑब्जर्वर सबमरीन बी है, सोर्स सबमरीन ए है, उसका स्पीड भी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गिवन है, फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग, राइट, नाउ इफ द सबमरीन barely miss each other, right, and then detect, सर उल्टा हो जाएगा सर, अवे जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, अच्छा ये माइनस हो जाएगा, नीचे वाला प्लस हो जाएगा, हाँ या ना, उस केस में f डैश इज इक्वल टू f नॉट ब्रैकेट v माइनस v नॉट हो जाएगा और v प्लस v नॉट हो जाएगा, बिकॉज एक दूसरे से दूर जाएगा, ठीक है, गॉट इट, एवरीवन गॉट दिस, फिफ्थ वन गॉट दिस, हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी कर, ठीक है, ओके, नेक्स्ट, वेरी गुड, नहीं समझ में आया पूछ लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आया पूछ लो, ठीक है, 12 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, देखते कौन कौन एब्सेंट है, सिक्स्थ वन, a student hold a tuning fork oscillating at 256 hertz, ठीक है, given, if not given, he walked toward a wall at a constant speed, right, what is the beat frequency, again ये f1 given है, f1 given है,
F2 निकल जाएगा. Tell me what is F2, guys? What is F2? It is F1 bracket. Now here the source is moving, so V by V minus Vs. So beat frequency निकल जाएगी. Wait. Okay, and it's echo. Sorry, and it's echo. So echo में क्या होगा? वापस आएगा ना? Echo में वापस आएगा, right? ठीक है, क्लियर है ये चीज? सो अगर echo में वापस आएगा, right? So this इसको मैं F0 बोलता हूँ, ये F1 है, this is F0. So echo में क्या होगा? After echo the frequency would be what? F1 V plus V0 by V. So दोनों को मिला दूंगा तो मैं क्या आएगा? Same formula is equal to F0 bracket V plus V0 by V minus V0. Guys, ये confusion प्लस माइनस का बहुत ज्यादा होता है, तो तुमको याद नहीं करना, रटना नहीं है, सोचना है. पास आएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, सो न्यूमरेटर को बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, इसलिए न्यूमरेटर में प्लस होगा, डिनोमिनेटर में माइनस. दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए, सो न्यूमरेटर को छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए. ओके, गॉट इट? बन जाएगा, है ना? And so this is F2. So beat frequency is what? F2 minus F0. This is your beat frequency. Clear है? बन जाएगा? Raise your hand. Okay? और अगर दूर जाएगा, if it is moving away, second one, right? If it is moving away, right? So it will be opposite. It will be V minus V0 by V plus V0. और उस केस में beat frequency given है. सबको ये समझ में आ रहा है? किसी को भी दिक्कत है प्लीज पूछ लो, प्लीज प्लीज पूछ लो. राइट, इतना प्लीज तो कोई नहीं करता है, थोड़ी सी तो दया करो मेरे पे. राइट, ठीक है. नेक्स्ट, सेवेंथ वन, आई गेस सबको समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन: two train whistles at identical frequencies. When one train is at rest in the station and the other train is moving nearby, a passenger standing. Okay. Now, same. ध्यान दो, identical frequency है. So F0, when one train is at rest, one train is at rest. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझो. सर इनिशियली सर सेम है, एक स्टेशनरी है, राइट, another is moving nearby, a passenger standing on this. तो याद है ऐसा क्वेश्चन बन गया सर, दो सोर्स हो गया ना, एक ये सोर्स हो गया, एक ये सोर्स हो गया, ये हमारा पैसेंजर है. नाउ दिस इज एट रेस्ट, स्टेशनरी है, ये मूव कर रहा है, दिस इज मूविंग. तो अगर ये मूव कर रहा है तो इसका फ्रीक्वेंसी कुछ सुना ही होगा, F1, और इसका फ्रीक्वेंसी इज F2. सो बीट फ्रीक्वेंसी निकालना है, राइट? दिस इज द कांसेप्ट. ऐसे ही कुछ होगा, बट यहाँ पे क्या दिया है? बीट फ्रीक्वेंसी इज गिवन. ये बीट फ्रीक्वेंसी गिवन है ना? F1 minus F2 is given है, right? So you are asked to find what? Two possible speed and the direction of the moving this. So easy है ना, एक केस में दोनों अगर पास आ रहे होंगे, right, तब निकाल लोगे, right, है ना? mod of F1 minus F2 is given. So एक रेस्ट में है तो उसका तो गिवन है, रेस्ट में तो इट्स गिवन, रेस्ट में 180 होगा, रेस्ट है ना, इट इज एट रेस्ट, राइट? केस में अगर दूर लगेगा तब निकाल लेंगे, as simple as that, right? So you just have to find F2. F1 is given, right? Yeah, F2 is given, F1 you have to find. So अगर पास आ रहा है, if this is moving in this direction, then F1 is equal to what? F0 bracket 1 by V by V minus Vs, right? है ना? उस केस में आ जाएगा Vs. सेकंड केस में F is equal to F0 V by V plus Vs. एक V इस केस में आ जाएगा, ठीक है? So दोनों केस में सॉल्व करने पे दो आ जाएगा. Everyone got this? हाँ या ना? Everyone got this? Okay, right? So last question everyone, last question. ठीक है, 8th one.
when the train is approaching the observer, the frequency is 100 CPS. Okay, so CPS is cycle per second. ठीक है, CPS का full form cycle per second है, frequency से समझ लो, right? It is just frequency. ठीक है, CPS is cycle per second, तो frequency हो गई ना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है. When it has passed the observer, it is 50 CPS. Find the frequency when the observer. सर ये तो सेम क्वेश्चन हो गया सर, जो हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं. अप्रोच कर रहा ऑब्जर्वर पे तो क्या होगा? टेल मी, अगर ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहा है तो क्या हो जाएगा? V बाई V माइनस VS. दूर जा रहा है तो क्या होगा? F नॉट V बाई V प्लस VS. सर रेशियो इज गिवन, वी कैन कैलकुलेट. हाँ या ना? ओके, क्लियर? राइट, ओके. सो आई गेस ये चैप्टर सबको समझ में आया होगा, इजी होगा ये चैप्टर सबके लिए, सबको समझ में आ रहा है? श्रेया, प्रियंका, शुलिका, ओके. सो सी, टेस्ट के लिए आई जस्ट टेल यू, टेस्ट के लिए तुम लोग को ज्यादा